Assalamu alaikum, and you are watching CS by MFSL. Today we are going to be discussing the O-level and A-level Cambridge syllabus for the P2 section, and I will be teaching you how to write your first code in Visual Basic. So let's get started. We all know that in order to program a pseudocode into Visual Basic, or in order to write any algorithm, we must know the sequence of programming. That is, we need to have an input in our problem, something that we have to take from the user. Then we have to put a function to it, or code an algorithm to it, or code a function to it, or it can go through a process, and then finally we will get some kind of an answer on screen. So for example, if I were to give a loan to someone and return my loan back with interest, so what will be my input? The user will ask me the amount of money that he needs, right? He will ask me the amount of money, and then I will put in some formula of calculation of the interest and or my profit, and then I will give him the output that this is the amount of money that you need to give me back. So without further ado, we will start programming with Visual Basic, and I will be guiding you throughout coding. And I've written some questions on the screen, on the Visual Basic screen, in order to learn how to code and practice. So let's start. So we know that we need to have an input and a process and output, but in order to know how to write the input statement and the output statement in Visual Basic, so I will tell you that in order to take an input, in order to write any output in Visual Basic, we write console dot write line. So whatever I write in this, for example, hello world, this line will be output on my output screen. In order to, okay, so I will run this output. How do I run my output? I press the control button, the shift button, and the B button. This is how my output is built. And then I can press control F5 to run my program. And see, this is my output. Okay. So actually this line is actually working. I need to erase this. And we're good to go. So let's run this. So my first output is coming as hello world. Now what I need is, I want to ask a user to input their name. Not only just say they're gonna ask me my name, so they're gonna ask an input from me, and then they want me to then the computer will say hello plus my name. So since my name is Ali, I need to first declare a variable. A variable is a temporary memory location, that holds a value. So the value that the user will give will be stored in this variable called name. And in order to declare that variable, we have to write dim. So what will we do is that I will say console.writeLine, what is your name? So I will write an output statement that what is your name, and then I will have to take an input in the variable. So in Visual Basic, my input statement is called console.readLine. So this is how I take an input from the user. अगर मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए होगा तो मैं लिख दूंगा name is equals to console.readLine. इसको बंद कर देते ताकि ये लाइन रीड ना हो. This is called the input statement. अब जब वो मेरा नाम मुझसे ले ले यूज़र, तो वो उसके बाद फिर आउटपुट करे console.writeLine hello and मेरे नाम के साथ. So what I can do is I can put an and sign and write the variable name that is by the name of name. तो इस वेरिएबल का नाम जो मैंने रखा था वो नेम रखा हुआ था, तो मैं हेलो और इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट एक साथ कर सकता हूँ. So let's see what will happen when I run this. So the computer is asking me what is my name. So I'm going to say it's Ali Faisal, yeah, MA Faisal, and it's going to say hello MA Faisal.
So this is a simple program that will ask me my name, and then it will tell me, it will output me what my name, a hello statement and my name along with it. Okay, so now we are gonna come to the actual input process and output questions. This was just to show you what an output statement looks like. An output statement is console.writeLine, and an input statement is console.readLine. Now we are ready to write actual programs. So this is a question that I want to calculate the area of a given circle, and I also want to calculate the volume of sphere. So I know that the formula for volume is 4 upon 3 pi r cube, and I know that the formula of area is pi r square. So I know these formulas. So in order to write a program, what value do I need to have? I need to have the value of radius. So यूज़र मुझे रेडियस की वैल्यू अगर इनपुट करेगा तो मैं उस रेडियस की वैल्यू को फॉर्मूला लगा के एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो जो भी मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है एरिया जो है वो मेरा आउटपुट होगा और रेडियस जो है वो मेरा इनपुट होगा. तो मैं अगर रेडियस और पाई को रेडियस को उसका स्क्वायर कर दूँ और पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी. सो व्हाट आई नीड इज़ आई नीड वेरिएबल्स. सबसे पहले मुझे एक मेरा आउटपुट वेरिएबल होगा एरिया, इसके अंदर एरिया कैलकुलेट होगा और आउटपुट होगा. रेडियस का वेरिएबल जिसके अंदर मैं रेडियस की वैल्यू लूँगा. आई विल आस्क द यूज़र व्हाट द रेडियस विल बी, एंड वॉल्यूम भी जो है वो रेडियस से ही कैलकुलेट हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम के फॉर्मूले में भी यूज़र जो इनपुट करेगा वो रेडियस करेगा. पाई की वैल्यू इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू and it will be cubed or square. So let's just declare pi, and pi की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0.3.142. that is the value of pi, and it will never change. And this is a constant value. A constant is a value that never changes throughout the program. A variable might change and always changes. जब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मैं इसके अंदर different values दे सकता हूँ. It will hold different values. So what I can do now is I can ask the user to input the radius. So console.writeLine, first of all I will tell the user what he needs to do. Please enter the radius of, now I will take radius as input. So radius, this variable I will take as input. Radius is equals to console.readLine. या अब मेरे पास मेरा इनपुट हो गया. सो माई फर्स्ट स्टेप इज़ डन. इनपुट मेरा हो गया. मेरा प्रोसेस क्या होगा कि मुझे एरिया का इस फॉर्मूले को मेंशन करना है. तो मैं लिख दूंगा एरिया इज़ इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय, पाई की वैल्यू 3.142 है. रेडियस मेरा यूज़र ऊपर इनपुट कर देगा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस. सो रेडियस इंटू रेडियस इज़ रेडियस स्क्वायर्ड. ये मेरा प्रोसेस हो गया. और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखने का मेरा फॉर्मूला क्या है? 4 upon 3 pi r cube. So I will also calculate volume here. Volume is equals to 4 divided by 3 multiply by pi multiply by radius multiply by radius multiply by radius. So this is radius cube. So मेरे पास finally output क्या आ जाएगा? console.writeLine. I will have two outputs. My first output will be your area is, and ये जो वैल्यू है मैं एरिया की वेरिएबल की लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी राइट हैंड साइड पे कैलकुलेशन होगी वो इस एरिया के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी. जब स्टोर हो गई तो फिर मैंने उसको यहाँ पे आके आउटपुट कर दिया इस लाइन के ऊपर. एंड आई विल डू द सेम फॉर वॉल्यूम. console.writeLine, योर वॉल्यूम इज एंड वॉल्यूम. सो आवर प्रोग्राम लुक्स ग्रेट. मेरा इनपुट भी हो गया, मेरा प्रोसेस भी हो गया, मेरा आउटपुट भी हो गया. और ये जो मैंने ऊपर डिम किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड डेक्लेरेशन. इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं. डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, और इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं इसको. सो दिस लुक्स गुड. लेट्स रन दिस प्रोग्राम. So it is asking me to input the radius. So I'm gonna say my radius is, for example, 3.2 centimeter. तो मेरा एरिया क्या आ गया? 32.17, और मेरा वॉल्यूम आ गया 137.27. So this is working fine. मेरा प्रोग्राम चल रहा है. मुझसे यूज़र एक इनपुट मांग रहा है और उसका मैं एक आउटपुट दे रहा हूँ. So let's just comment all of this and move to the next question.